Now, next question is, and this question is from 29 Jan shift 2. Question is, let x equal to m by n. M and are co-prime natural numbers. Be a solution of the equation cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by n. And let alpha beta, where alpha is greater than beta, be the roots of the equation mx square minus nx minus m plus n equal to 0. Then the point within bracket alpha beta lies on the line, and these are the option. These are the option. So first of all, given equation is, here given equation is cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by 9. Now, what we will do here, let sin inverse x equal to theta, which implies x is equal to sin theta. अब साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर हम थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 theta equal to 1 by 9. Now we know that cos 2 theta. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta, which implies we can say that 2 sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. And what does it mean? It means that 2 sine square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta. Cos 2 theta की वैल्यू क्या है, 1 by 9, तो it will be 1 by 9. तो 9 minus 1 क्या हो जाएगा, 8 by 9. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 4 by 9. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 by 3. साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 by 3. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, let x is equal to m by n, where m and are co-prime natural numbers, be a solution of the equation. तो देखो, as per question, alpha is greater than beta, be the roots of the equation. तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, साइन थीटा, here साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 by 3. here साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 by 3. Why? बिकॉज नेचुरल नंबर की बात हो रही है और साइन थीटा क्या एक्स है, and x is equal to 2 by 3, and as per question x is equal to m by n. It means what? It means m is equal to 2 and n is equal to 3. ठीक है. Now we have to find the value of mx square minus nx minus m plus n equal to 0. Now we have to find the value of mx square minus nx minus m plus n equal to 0. देखो in place of m we will put 2, so it will be 2x square. In place of n we will put 3, so it will be minus 3x. Again minus 2 plus 3 will be equal to 0. Finally what we will have, 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2x square minus 2x and 2 1 जा 2 minus x plus 1 equal to 0. Now 2x common, it will be x minus 1. Minus 1 common, x minus 1 equal to 0. Finally what we will have, देखो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, x minus 1. Another factor is 2x minus 1 equal to क्या हो जाएगा, 0. It means x will be equal to 1 और x will be equal to 1 by 2. अब as per question अल्फा is greater than बीटा, जो रूट्स है उसमें जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है. इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा विल बी इक्वल टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 1 by 2. तो 1 और 1 by 2, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट है, देन दिस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1 कॉमा 1 by 2. अब ये किस इक्वेशन पे लाई करेगा, देखो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे रखोगे तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा प्लस 2 5, तो इसको तो इस पर तो लाई करेगा नहीं. यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 4, इस पर भी लाई नहीं करेगा. 3 1 जा 3 और माइनस 1, इस पर भी लाई नहीं करेगा. यहाँ देखो x की जगह 1 रखो, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, ये आपका आंसर होगा. जब आप x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 1 by 2 रखोगे, इट विल बी इक्वल टू 9, which is equal to the right hand side. So this is the final answer of this question.
Is it clear? ठीक है. Now our next question is, and this question is from 31 Jan shift 1 2024. Question is, for alpha beta gamma not equal to 0, if sin inverse alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma equal to pi, can I say that sin inverse alpha pi by 3, sin inverse beta pi by 3, sin inverse gamma pi by 3? In that case it will be equal to pi. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.